Hey guys, welcome back to my channel and today we are going to cover complete CSS grid layout. यानी कि आज हम complete CSS grid layout को देखने वाले हैं. What are these? And it is really one of my favorite topic. So let's begin without any further ado. Now guys, before starting this lecture, I would like to discuss what is CSS grid layout. यानी कि मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि CSS ग्रिड लेआउट होता क्या है बेसिकली. नाउ इफ़ यू गो ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक W3 Schools और CSS Tricks, you will find that as per definition they have defined CSS grid layout as a powerful grid layout which has been introduced recently in CSS, and now you don't have to use all those bootstrap files which makes your code very heavy. So you don't have to use those libraries, external libraries. Now you can completely create responsive website using these CSS grid layouts and media queries. So that is basically grid layout. So if you have seen my previous video, that is Flexbox, so there I have already discussed you can use Flexbox completely and you can create the whole web page without any much issues. Like earlier what we have to do, we have to create use float property, so that was really complex. So that is why Flexbox and CSS grids have been introduced. Now in industry people say that Flexbox is being overtaken by CSS grids, but I don't think so. मुझे नहीं लगता है कि Flexbox को CSS grid ने completely overtake किया है. You can in my whenever I use project any these properties in my project, अगर मुझे कोई properties use करनी होती हैं तो मैं दोनों का यूज़ करता हूँ. मैं Flexbox का भी यूज़ करता हूँ, मैं CSS grid का यूज़ करता हूँ. मैं दोनों को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री देखता हूँ कि भाई अगर मुझे कभी 2 डायमेंशनल चीज़ें चाहिए होती हैं तो मैं CSS grids का यूज़ करता हूँ. मैं मुझे 1 डायमेंशनल चीज़ें चाहिए होती हैं. नाउ व्हाट आर दिस, आई विल डिस्कस देम एज वेल, है ना. सो basically understand that CSS grid is powerful grid system which has been introduced recently and it is supported by all modern web browsers except old versions of Internet Explorer. They don't support CSS grids. Apart from that, we will see that this is really beneficial, and if you haven't watched Flexbox, please go and watch that lecture before, because that will make you more understandable and make your mind more open, so that you can easily understand and grab these concepts more firmly. Okay, so let's see, and we will also see that what are basically difference between Flexbox and CSS grids, and where we have to use Flexbox and where we have to use CSS grids. So guys, now we are going to see how we can use Flexbox and how we can use CSS grids, and what are the difference between Flexbox and CSS grid. Now don't see them as a extension. I am again repeating, don't see them as a separate thing. See them as a connected thing only. See them as a complementary thing. Don't see them that CSS grid is the extension of Flexbox. CSS grid is more powerful as compared to Flexbox. There are people who have the strong opinion, but you don't have to have such kind of strong opinion. Like what I do in my projects whenever I have to use, so for example if I have to use like we will see, first of all let's discuss what is the difference so that we can explain much more better, so that you can easily understand. Now I don't know who has created this image, but the someone who has created this image, he has done very marvelous job, because this image explains you clearly the difference between Flexbox and CSS grid. Now here in Flexbox you can see that 1 dimensional and you can see the arrow sign. Now in Flexbox basically you can do only 1 dimensional things, like either you can manipulate row or you can manipulate column at the same time. You can't do both things at the same time. आप दो चीज़ों को, मतलब या तो आप रो को मैनिपुलेट करेंगे एक टाइम पे, या फिर आप अपने कॉलम को मैनिपुलेट करेंगे. आप दोनों चीज़ों को एक साथ मैनिपुलेट नहीं कर सकते एट द सेम टाइम. फॉर एग्जांपल व्हेन यू राइट डिस्प्ले फ्लेक्स, सो व्हेन यू राइट फ्लेक्स डायरेक्शन रो और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, सो आइदर यू आर मैनिपुलेटिंग रो ओनली और यू आर मैनिपुलेटिंग कॉलम. व्हेन यू आर राइटिंग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, देन यू कैन नॉट मैनिपुलेट रोज, but when you are writing flex direction row, you cannot manipulate columns. So that is the difference between
Flexbox and CSS Grid. But in CSS Grid, what you can do both at the same time. When you are writing display grid, you can manipulate your content row wise as well. You can manipulate content column wise as well. So that is the difference between Flexbox and CSS. Now what I want to say that don't see them as a separate thing, see them as a connected thing. भाई जब आपको प्रोजेक्ट्स में रो वाइज चीज़ों को मैनिपुलेट करना हो, भाई कि सिर्फ आप रो ही को मैनिपुलेट कर रहे हो, आपको वहाँ पे कॉलम की ज़रूरत ही नहीं है मैनिपुलेट करने की, then why don't you use Flexbox? When you are manipulating row at the same time and it is going to affect only row, then you use Flexbox. But if you need in the project that you have to manipulate row content as well as column content at the same time, go with CSS Grid. So that is my opinion. Don't have that kind of strong opinion that I am going to use only CSS Grid. Flexbox is useless now. Flexbox is obsolete. No, Flexbox is not absolute. See them as a complementary thing. आप दोनों को एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री देखिए और दोनों को यूज़ करिए अपने प्रोजेक्ट में, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर बेसिकली गेटिंग मैनिपुलेटेड. You have the firm understanding of the concepts of CSS, how you can manipulate things and create more beautiful things. Okay, so that is my opinion, and I hope you understand the difference between Flexbox and CSS Grid. What is the difference? I hope, and if you have any problem, please comment it down below in the comment section. I will definitely reply you. And don't forget to subscribe the channel. And now we will move on to my VS Code editor, and we will see how we can use CSS grids and create the whole website without much issues. Okay, so let's jump on to my VS Code editor. So now guys, we are back in our VS Code editor, and here I have written some boilerplate code over here. You can see that there is an index.html file, and I have also created style.css file where I am going to write my CSS code, and I have also linked them with this link tag so that whatever the changes I am going to make, it will get reflected back over here. Okay, so now I am going to create one section tag, and I'm going to use semantic tags because now W3 constraint is there, and it says that we need to use these semantic elements in order to make our website or any kind of application more SEO optimized. So use these sections so that these Google crawlers can easily understand your code. Okay, so I'm going to write here, create one section here, and inside this section I'm going to write one class, that is grid class. And inside this I am going to create 3 divs with grid item. Okay, so for that what I'm going to write, I'm going to write grid and item, and then I'm going to multiply it by with 3, and here you can see that I have created 3 divs, and inside this div I'm going to write item 1, and I'm going to copy this and I will paste it over here. Paste here 3, and I'm going to change the name item 1, item 2, item 3. Now you can see that it gets reflected back over here. Okay, so I hope till now you understand what I did over here. And now what I'm going to do, I'm going to make it little bit more beautiful so that you can easily understand. And so for that what I'm going to do, I'm going to write some code over here. So first of all, let me make some changes. So for changes, what I'm going to do, I'm going to write some necessary properties. So here I'm going to give padding 0, and here I'm going to give margin 0, and box sizing border box. Now these are basic tags which you should always write whenever you are going to write style.css, because the default browser properties or default browser what we say before like your browser is there, right? So your browser have certain default parameters, like there must be some padding they have already given, there must be some margin they have already given. So in order to those properties not to affect our whatever the changes we are going to make, so that is why we always keep them as 0, so that they won't get affected with our divs or whatever the changes we are going to make. So that is why these properties I have written. And box sizing, you can google it around, you can see what it is basically. And now I'm going to write here body,
and inside body tag what I am going to do, no, not body, let's do with grid. So inside grid what I am going to do, I am going to write, first of all let me make these grid items more prettier. Okay, so I'm going to write here background color, I'm going to give something like blue violet. Okay, and so that these gets changed into different colors. Okay, now what I am going to do, or maybe I can write here background border so that you can easily understand, 1 pixel solid red or maybe black. Okay, so I hope you can see that I got the border over here. Now what I am going to do, I'm going to write text align center so that they can get sent in center. Okay, now what I am going to do, till now you understand what I did. Okay, now I'm going to write some padding. So for padding I'm going to give 1 rem. Okay, now you can see that there are some changes which has got appeared. Now I'm going to use CSS grid property. So how to use CSS grid property? So I'm going to apply all these CSS grid property on whole divs. Okay, so for that what I did, I have created one section that is with a class name grid. So I'm going to apply CSS grid property over that, so that whatever the changes we are going to do, it will get reflect back on these items, that is item 1, item 2, item 3, right? So here what I am going to do, I am going to write here grid, and for using display property what you are going to write, you will write display grid and soon save it. Now you can use other CSS grid properties because you are using CSS grid right now. Now अभी तक हमने अगर क्या किया है, अगर हम इसको हिंदी में समझें तो हमने क्या किया है, हमने एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है, सेक्शन का नाम हमने क्लास नेम दिया है ग्रिड. नाउ इनसाइड दिस ग्रिड मैंने 3 डिव्स बनाए हैं विद नेम दैट इज item 1, item 2, item 3 एंड देयर क्लासेस आर ग्रिड आइटम. राइट नाउ हमें ग्रिड CSS ग्रिड्स का यूज़ करना है और इन ग्रिड आइटम्स को अफेक्ट करना है CSS ग्रिड प्रॉपर्टी के थ्रू. ओके, एंड हियर आई हैव रिटन सम CSS स्टाइल डॉट CSS कोड, यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ CSS स्टाइल कोड लिखा है. यहाँ पे जो एस्ट्रिक है ये कहता है कि इन प्रॉपर्टीज़ को, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जितनी भी तुम्हारे टैग्स आने वाले हैं उन सबको अफेक्ट करो. ओके, तो यहाँ पे जो पैडिंग है बेसिकली क्या है, जब हमारा ब्राउज़र बनाया जाता है तो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट पैडिंग दी जाती है, डिफ़ॉल्ट मार्जिन दी जाती है, डिफ़ॉल्ट बॉक्स साइजिंग दी जाती है, तो उनको वो जो हैं वो हमारे अदर टैग्स को अफेक्ट करें, इसलिए हमने ये पैडिंग लगा रखी है. ओके, तो हमने इनको 0 कर दिया है ताकि वो हमारी जो भी हम डिव्स को यूज़ करेंगे उनको वो अफेक्ट न करें. ओके, नाउ यहाँ पे हमने पहले क्या किया है, हमने हमें इन ग्रिड आइटम्स को अफेक्ट करना था, तो हमने क्या किया कि भाई इनको थोड़ा सा समझने के लिए बड़ा कर लिया. ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रिड में डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ किया है. अब नाउ यू कैन यूज़ these grid properties. Now I have already discussed that these CSS grids are basically 2-dimensional. So 2-dimensional is there, right? Now I'm going to create some columns. So for creating columns, what you can do, you can use grid template column property. Okay, and like if I give here 400 pixel, 400 pixel, 400 pixel. Now as soon as you will save, we can see that you have got 400 pixels these boxes. Now you can see that using column I have created 3 column. अगर मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे मैंने 3 दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर मैंने 3 यहाँ पे दिए हैं, इसका मतलब 3 कॉलम बनेंगे 400 पिक्सल के. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम बन गए 400 पिक्सल के. ओके, अब अगर हम इसमें और सारे ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल div 3 है, div 4, div 5, div 6, div 7. नाउ अगर हम इनको 3 की जगह 4 कर दें, इसको 5 कर दें, इसको 6 कर दें, इसको 7 कर दें और फिर सेव करें, तो आप देख रहे हैं कि हमारे सिर्फ 3 ही कॉलम बन रहे हैं ग्रिड, क्योंकि बेसिकली हमने क्या किया कि कंटेनर बनाया हुआ है ग्रिड का, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की और ये ग्रिड आइटम जो है उस ग्रिड कंटेनर के अंदर हैं. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही कॉलम बन रहे हैं. अब अगर मुझे 4 कॉलम बनाने होंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 400 पिक्सल और ऐड कर देंगे, तो क्या होंगे, हमारे 4 कॉलम बन जाएंगे. नाउ यू कैन ईजिली सी दैट वी डोंट हैव टू यूज़ फ्लोट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अरेंज देम. यू कैन यूजली यूज़ दिस
CSS grid properties, right? Okay, till now you understood what I did over here. Now there is one problem. In order to make them responsive, अगर हमें इनको responsive बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई मैंने 400 पिक्सल दिया है, बट ये साइज़ देख सकते हैं आप क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये साइज़ रिस्पॉन्सिव नहीं है. ये 400 पिक्सल को कवर करने के लिए ये क्या कर रहा है, ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस व्हाट CSS grid property they have introduced fraction property, that is fraction what we say fraction unit. ये fraction unit क्या करती है कि भाई जो हमारी स्क्रीन साइज़ है उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करो. अब अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन यूनिट में कैसे यूज़ करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिख दें 1FR ना, फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी फ्रैक्शन यूनिट को यूज़ करने के लिए आपको FR का यूज़ करना पड़ेगा. तो अगर हमने यहाँ पे 1FR किया है तो हमारी जो भी स्क्रीन साइज़ है, यानी हमारा जो भी स्क्रीन साइज़ है उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करो और जो भी आपकी साइज़ जो भी स्क्रीन साइज़ है उसको पूरा कवर करो. तो अगर मैं अभी सेव करूँ इसको तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी स्क्रीन साइज़ है उसकी ज़्यादा नहीं जा रहा है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइटम 1 और आइटम 2 ही आ रहा है, आइटम 3 आइटम 4 2 कॉलम बने जो कि आपकी पूरी स्क्रीन को कवर कर रहे हैं. अब अगर हम इसको चेंज करके 1FR कर दें और फिर 1FR कर दें तो आप देख सकते हैं कि मेरे 4 कॉलम बने हैं और चारों इक्वली डिवाइड हैं सेक्शंस में. तो आप देख सकते हैं कि हाउ दिस इज़ रियली गुड, मतलब कितना ये अच्छा है कि भाई आपके 4 सेक्शंस बन रहे थे एंड यू हैव ऑटोमेटिकली यूज देम. सो आई होप टिल नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज ग्रिड कॉलम्स, व्हाट इज फ्रैक्शन यूनिट. ओके, नाउ अगर हमको मान लीजिए 3 कॉलम चाहिए जिसमें हमारे 2 जो है वो बड़ा हो एज़ कम्पेयर टू 1 और 3. तो अगर मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए और मुझे जो सेकंड वाला है उसको थोड़ा बड़ा रखना है एज़ कम्पेयर टू 3. So as soon as you will save, now I don't know what had happened, let me check. Okay, so आप देख सकते हैं कि जो मेरा सेकंड आइटम है वो बड़ा हो गया है, मतलब दुगना हो गया है जो भी हमारी साइज़ को कवर कर रहा है आइटम 1 और आइटम 3. So I hope till now you understand how we can create columns, that is column 1, column 2, column 3. Okay, now we will see. And there is another property that is, अब अगर हमको इनके बीच में गैप देना है, so how we can give gaps. So for giving gaps you can use grid gaps. And for example if I give gap 1 rem and if I save them, grid gap, so you can see that I got 1 rem, that is 16 pixel gap among all these affected boxes, right? So I hope till now you understand what we are doing over here. Now I am going to use, now since CSS grid is 2-dimensional, right? So I can also manipulate with row wise. So how we can use row wise? So for manipulating row wise you can write grid template rows, and here you have to provide the properties. Now what are different properties which you can use over here? So for example if I want 2 rows with which are going to cover complete columns, right? So I'm going to use 1FR, and as soon as you will save, you will see that you got 2 rows with the same thing. Now here you will not understand what it is basically doing. For example, let me remove this and save it. Okay, now if I change this, and so here you can see that what is happening here, it is taking 2 FRs, right? If I change it with 1 FR, okay, here you will not understand like this. For example, let me make it more changeable so that you can understand easily. Now for example, you want to make let's say you want first row to be 3 FR and second row to be 1 FR. So if I save them, so you can see that my first row got 3 FRs and the second row got 2 FRs. Now if I go and make some change like 2 FR and third row will be 1 FR.
अगर मैं इनको सेव करूं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी थर्ड रो है वो 3FR की हुई 3 गुनी हो गई, जो सेकेंड रो है वो दुगनी रही और थर्ड रो मेरी उतनी की उतनी रही। और जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ हैं ये अफेक्ट नहीं हुई हैं, दे आर नॉट गेट अफेक्टेड विद दोज थिंग बिकॉज वी हैव क्रिएटेड ओनली 3 rows बिकॉज it is affecting only first 3 rows. So I hope till now you understand what is happening over here. Now you want to affect other rows on which grid this grid rows doesn't happen. So for that you can use grid auto rows, and if you give the property to FR and save them, now other properties यानी कि जो other हमारी grids हैं, other मेरी जो rows हैं वो affect होंगी। यानी कि पहले 3 को तो हम अफेक्ट कर ही रहे हैं, जो हमारी अदर रोज़ हैं वो अफेक्ट नहीं हो रही, तो उनको अफेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रिड रोज़ ऑटो का यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड ऑटो रोज़ का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप टिल नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट वी डिड ओवर हियर, ओके। एंड नाउ वी विल सी हाउ वी कैन मैनिपुलेट दीज बॉक्सेस मोर effectively, okay। So guys, one thing I would like to show you more, like right now what we are doing, we are manipulating only rows, but I already told you that grid CSS grids are basically 2-dimensional, so you can manipulate vertically as well as horizontally. So right now I am manipulating these boxes according to the rows, but I haven't shown you how you can do both of them at the same time. So how you can do, you can write here grid template columns for manipulating according to the column, and you can write here 2FR and 1FR. So I am creating 2 columns that is horizontally, and the first column will be like twice of the second column. So if I save them, so you can see that we are manipulating our rows as well as columns as well as. So that is why this thing is really important, and that is why grid is used a lot, because you can manipulate at the same time horizontally as well as vertically. That is why CSS grids are 2-dimensional. So I hope till now you understood whatever the things I have explained you. Now one thing I would like to show you how you can manipulate these boxes. For example, I want, like for now if I say that, so whenever I am manipulating columns and rows, so it is affecting each and every row, each and every boxes, like whatever the content is there inside this grid class, all are getting affected. But I want to affect only like item 3, or I want to affect only item 6. So how we can do this? So for that we can also use something called as pseudo selectors. Now if you don't know these pseudo selectors, please google out, because these are the fundamental concept you should know. So for example, I want to manipulate this item 3. So item 3, in order to manipulate, you can write here nth child, that is a pseudo collector. For example, I want to manipulate this item 3. So what you can do, you can write here grid item colon nth child, and you can give here 3, okay, and as soon as you will save, things will get changed. For example, if I go here and type here background color to brown, okay, and saved it, so you can see that the third item got manipulated. So let me show you something else instead of this. So right now you can see that all these things are there. Now for example, I want to manipulate the third column. So for manipulating third column, what you can do, grid item colon nth child, let me make it, okay, now you can see it easily. Now if I go here and type here background color to crimson and save it, so you can see that using pseudo collector we are we can say we are basically manipulating that box. We can select that box, that is the third box, or if you want to select first box, you can write nth child 1, or if you want to select the last box, you can write here nth child 7, or you can use first child, second child pseudo first child, last child pseudo selector as well. So please google it out and understand that, because I am not going to explain these pseudo selectors, because it will be another topic, so it will hardly take 10 minutes to understand. So please go back and understand it. Right now
you want to apply, you want to make it more expandable, like for example you want to make it as a whole column. अगर आप चाहते हैं कि भाई item 3 जो है ये पूरा स्क्रीन को कवर करे, you want that this item 3 covers the whole screen, that is the whole row. So how you can do, you can write here grid column and you can specify that third row, that is third column, or you can say write that is from the first box till span 2 and save it. Now as you will save, you can see that it is selecting whole column, that is it will start from the first and it will cover the whole column. So I hope till now you understand what we are doing over here. Now for example you want that grid call, that is third child takes the size of 2 rows. So how you can do, so for that you can use grid row and you can specify 2 over here, and then you can specify that, or you can say that this is a second row, right? So you can specify that grid row, that is it will start from the second, and I want that this grid row is going to cover 3 rows size. So you can specify 3 and save it. So you can see that first of all this here grid row, that is 3FR, it got overridden by this property, right? So that is why the third item, that is the second row, is basically is of 2 rows, and the span it is covering the whole rows, right? So I hope till now you understand what we have done over here. Okay, so starting from the second, it is covering all these properties. So I hope till now you understood whatever I have explained over here. If you are having any kind of confusion, please comment it down below, I will definitely explain you. Now अगर मैं इसको सभी चीज़ों को हिंदी में समझाऊँ, सो अगर मैं हिंदी में समझाऊँ, और वी कैन से दैट हिंदी में समझते हैं कि भाई मैंने अभी तक क्या किया है. तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर आइटम को चूज़ करके उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैनिपुलेट करना है, तो इसके लिए आप इन ग्रिड कॉलम ग्रिड रोज प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं. यानी कि आपको पहले क्या करना है कि उस बॉक्स को सेलेक्ट करना है. तो उस बॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए भाई सूडो सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, लाइक एन चाइल्ड इज़ देयर. नाउ आई एम सेलेक्टिंग हियर थर्ड, सो from that I have selected that particular box. Now I am manipulating that box. So in order to manipulate that box, you can directly do it like this. And I think in CSS basically आप जैसे आपने थर्ड सेलेक्ट किया, अब आपको अगर कॉलम वाइज इसको मैनिपुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई ग्रिड कॉलम 1, जो हमारा कॉलम 1 हो उसको एक्सपैंड करो, कॉलम 1 से इसको एक्सपैंड करो जो कि 2 तक जाएगा. मतलब मेरे कॉलम 1 से एक्सपैंड करो और उसको कम्प्लीटली एक्सपैंड कर दो. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 4, तभी क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 कॉलम बन गए. देख लिए आप 1 2 3 4 कॉलम बन गए, लेकिन जो पहला थर्ड वाला है ये पूरे के पूरे कवर करे. सो आई होप टिल नाउ यू अंडरस्टैंड. अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो क्या होगा, जब आपने 1 किया तो ये क्या कर रहा है कि भाई सिर्फ 1 कॉलम को, पहले कॉलम को ये कवर कर रहा है, राइट? ये पहले कॉलम को कवर कर रहा है और दूसरे कॉलम के लिए जगह छोड़ दे रहा है. अब अगर यहाँ पे 3 कर दूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कॉलम बन गए हैं और ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी को हटा दे रहा है, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट द लास्ट प्रॉपर्टी गेट सेलेक्टेड एज अ होल अपार्ट फ्रॉम दिस. लाइक अगर आपने यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रो लिख रखा है, फिर यहाँ पे आप ग्रिड कॉलम को फिर से आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप कैसे ये जो प्रॉपर्टी ओवर रिडन हो जा रही है इस प्रॉपर्टी के थ्रू. सो आई होप टिल नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर. नाउ if I want to explain it more easily this thing, so if you write here grid column start, and I want to start from the first and grid column end, grid column end, and I want to end it at 2. So if you will save it, so what is happening, it is taking 1 and 2, right? So if I move it to 3, so what is happening, it is taking 1 in this, in this count these numbers like 1 and 2, राइट? यानी कि एक ये कवर कर रहा है और एक ये लाइन कवर कर रहा है. जब आप इस तरीके की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो आप उनको लाइंस के अकॉर्डिंग जाना है कि भाई ये लाइन कवर कर रहा है
और ये लाइन कवर कर रहा है, मतलब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इस पर ये ख़त्म हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, अब सब सेव करूँ, तो एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। अगर मैं इसको बड़ा करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बड़ा करूँ, तो एक लाइन मेरी ये हुई, एक लाइन ये हुई और एक लाइन ये हुई। सो आई होप टिल नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिड ओवर हियर। ओके, let me make it more easily understandable. Okay, so I hope till now I explained you what I did over here. अब इस चीज़ को आपको लिखने की बजाय क्या करना है, आपको इनका यूज़ करना है कि भाई ग्रिड कॉलम, आपको ग्रिड कॉलम आपको 1 से स्टार्ट करना है और स्पैन कहाँ तक करना है। जब आप स्पैन करेंगे 3 तक, तो क्या होगा कि भाई पहला बॉक्स लेगा, दूसरा बॉक्स लेगा, तीसरा बॉक्स लेगा। इसमें लाइंस नहीं देखता है वो, इसमें क्या करता है वो पूरे पूरे बॉक्सेस को देखता है, पूरे पूरे कॉलम्स को देखता है। सो आई होप टिल नाउ एंड आई एक्सप्लेन्ड यू वॉट एवर थिंग्स आर देयर एंड मोस्टली दीज थिंग्स आर यूज्ड। सीएसएस ग्रिड बहुत बड़ा टॉपिक है, बट 90% और हम लोग परेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे कि भाई हमें सिर्फ 20% ऐसी चीज़ें लर्न करनी जिसके थ्रू हमारे 80% रिजल्ट आए। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली वाइसेस पे, और अदर प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट दैट you can see the documentation because these are the fundamentals. If you understand these things, you can easily grab those things as well. So thank you so much for watching this video, guys, and I have covered mostly all the topics or important topics of CSS grades. And if you have any problem, please comment it down below in the comment section. I will definitely reply you. And thank you so much for watching this video. And in the next lecture we are starting React, that is the UI library for creating front-end development. So that will be really awesome topic because React, I really like it, and I'm going to make it more understandable, and I will explain you each and everything. So watch that video and it will be in complete Hindi. So thank you so much for watching this video, guys. See you in the next lecture.